Good evening, everyone. The class will start shortly. We will wait for another couple of minutes, okay? Good evening, ma'am. Good evening, Shlok. Hello, everyone. Good evening. Welcome to Tree Campus, everyone. How are you all? I'm well, ma'am. Okay. I'm also well, Shlok. So today's class is going to be very interesting. I'm back again. There are comments coming on the YouTube channels that, ma'am, we want faster speech classes.
once again. So yes, here I am back with parts of speech classes. But today the things are going to be a little bit different. Today I'm not only going to describe all the parts of speech, but I'll one step ahead. I'll go one step ahead. Okay. So before I'm going to start my classes, so first of all, let me talk about Tree Campus. As you all know, Tree Campus is the platform which helps you to enhance your communication, which helps you to boost your confidence and reduce your hesitation. If you want to go to crack an interview, if you want to enhance your reading skills, you can, in short, you can say that Tree Campus is the one platform for all your problems regarding your English communication. Good evening, Dayavati. I hope so your webinar went well yesterday. All right. Okay. So now let's, without wasting our time, let's start the class. But before that, मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि you should try to read at least one article daily. So आज मैं ना एक article को आप लोगों के सामने रखूंगी. I will present and you have to. But I want to see whether my students are reading or not. Yes, Rupali, you have some questions? Yes, ma'am. Ma'am, yesterday I was reading a book and there I found a word which meaning I'm not very clear about that meaning. That Okay. word was peculiar. Peclu. Ma'am, I'm not getting proper spelling. Peculiar. It's Peculiar. Yes, ma'am. It's Okay. correct. It's very common word, my dear. Ma'am, Peculiar it is means in negative sense or is a compliment? peculiar means something which is unusual or strange. But it's not a positive word. मतलब जब हम ना बहुत peculiar है, बहुत मतलब ये आप कह सकते हो ना कि something which we want to say in an unpleasant way. For example, if I say he has the most peculiar ideas. तो हम उसके जो आइडियाज है ना वो बहुत अनयूजुअल होते हैं, स्ट्रेंज होते हैं, बहुत विचित्र तरीके के आइडियाज आते हैं. शी कम विद वेरी पिकुलर आइडियाज. ओके. सो वी हैव टू कीप इन माइंड कि हम ये वर्ड स्ट्रेंज आप कह सकते हो, जो सबसे अलग थलग सा जो लेकर आता है उसको ही कहते हैं पिकुलर. So, ma'am, ठीक can है. we say this word is a antonym of unique? Unique antonym that I'll tell you. Okay, I have to study about it and then I'll tell you. Okay. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. You're welcome. Anything else you want to know? See, I love I love solving your queries, students. Good evening. Ilka. So if you are going through, if you're reading any article, if you're going through anything, come up with your queries. I love to tackle your queries. Okay. So we will do the reading part at the end of the class. So let's start the class now. So please pay attention. I can ask question anytime. So yes, here we are. Today's topic is explanation of parts of speech. So first of all, let me tell you let us understand what is the meaning and what is the requirement of parts of speech and how many are they. So in total, there are 8 parts of speech in the English language. Yes, there are 8 parts of speech in English language. Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection. I repeat, noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection. Now we will read about what is the requirement, what is the need of learning about these parts of speech. The part of speech indicates how the word function in meaning as well as grammatical within a sentence. So here's parts of speech tells us, describes or modifies that how a specific word function. Functions means
कि कैसे वो वर्ड जो है फंक्शन इन मीनिंग। फंक्शन मतलब वर्क करना, मतलब कार्य करना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये बताता है कि कैसे कोई एक वर्ड या सेंटेंस, हाउ इट्स फंक्शन, उसका अर्थ क्या है, स्पेशली व्हेन इट इज रिलेटेड टू ग्रामर। ठीक है, तो वो किसी भी सेंटेंस को या किसी भी वर्ड को ग्रामेटिकली करेक्ट या इनकरेक्ट करने के लिए वी रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। So I repeat this. How many parts of speech are there? So there are 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection. Now let's specify about all these parts of speech. We will learn about all these parts of speech in the next slide. So here we are, parts of speech. Noun. So noun is the most common parts of speech. वो बहुत common है. मैंने बहुत ही simple एक explanation दिया था कि suppose if you're not able to understand noun ना, so whatever things you see around yourself, for example, I can see a mouse, a laptop, a headphone, fan, I'm sitting on a sofa, a bed, a pillow, whatever I can see, whatever my all 5 senses can perceive are comes under noun. ओके, तो जो भी मैं अपने आसपास देख सकती हूँ, छू सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ, एंड दैट हैज अ नेम। मतलब कोई भी चीज जिसका कोई नाम हो, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब नाउन कहलाती है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज। इवन आवर आइडियाज आर ऑल्सो नाउन। For example, Daniel, London, table, hope. Mary uses a blue pen for her notes. This is the examples that we need to know about noun. Noun clear है सबको? Anything you want to ask about noun? Yes, Kirti, Rupali has Yes, shared. ma'am. Okay, very good. Dayavati, Megha, Kanika. Clear है noun? Okay. Let's come Yes, to ma'am. let's come to pronouns. So pronouns are the words, or you can say is a word that can be used in place of noun. For example, to avoid the repetition about of a noun. For example, if I used to say that Pooja ma'am takes classes on YouTube, Pooja ma'am takes regular classes on YouTube, Pooja ma'am comes on, Pooja ma'am does not take any class on Saturday or Sunday. So there is a repetition of Pooja ma'am, Pooja ma'am, Pooja ma'am. So we can replace it as Pooja ma'am takes classes on YouTube. She takes classes every day, Monday to Friday. She does not take classes on Saturday and Sunday. So in this way, you can replace the nouns with a pronoun. Now, what are the pronouns? He, she, it, I, we, us, them, those. There are multiple pronouns that we will read it further. So here is the definition. A pronoun is used in place of a noun or noun phrase to avoid repetition that I have already mentioned. What are the examples? I, you, it, we, us, them, those. I want her to dance with me. Okay, so these are noun and pronoun for you people. Next is adjective. Adjective, suppose if you have to say something, if you have to say something about me, about anything, about any quality, about anything you want to say about me. So, what are the words which modifies me? What are the words that describe more and more about me? That gives you the information about me. That word is specifically known as adjective. Adjective. Yes. If you describe me with more than one word, then the words which you will use to modify me, to describe me, that words are considered to be adjective. For example, like happy, beautiful, intelligent, uh, cruel, anything, anything that you use the term to describe any noun or pronoun. Yes, this has to be keep in mind कि adjective किसको describe करना होता है. Adjective describe करना होता है either noun को या pronoun को. Uh, Aishwarya Rai is very beautiful. So here we are using the term beautiful to describe Aishwarya Rai. She is an honest person. So who is she? I'm talking about Aishwarya Rai. And who is honest? And what is the quality about Aishwarya Rai?
that she is an honest person, मतलब कि वो बहुत ईमानदार व्यक्ति है. So adjectives describes or modify or gives more information about a noun or pronoun. Examples: cold, happy, young, true, fun. The little girl has a pink hat. Okay. The words little and pink both are noun. Sorry, adjective. Now here comes verb that we have learned on a big scale. Verb का तो हमने अच्छा खासा explanation ही किया है. Any action that has been taken place by a noun or pronoun comes under verb. Shows an action or a state of being. मतलब कि या तो कोई कार्य हो रहा है या तो उसकी अवस्था के बारे में बताया गया हो तो उसको verb कहते हैं. For example, go, speak, eat, live, are, is, whatever it is. I listen to the word and then repeat it. I listen to the word and then repeat it. So here, listen is an action word. Repeat is an action word. So these two words shows any action. That is why these are called verbs. Now here comes adverb. हम लोग हम लोगों ने अभी तक नाउन के ऊपर एक क्लास किया है, वर्ब के ऊपर क्लास किया है, ठीक है. नहीं, वर्ब्स के ऊपर ही हम लोगों ने बेसिकली क्लास किया. आज हम लोग नाउन को थोड़ा सा और स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है. उसके बाद वन बाय वन मैं एक पार्ट ऑफ स्पीच लूंगी और उसको पूरा प्रिसाइजली उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है. तो हियर कम एडवर्ब. अब जैसे एडजेक्टिव जो है वो मॉडिफाई या डिस्क्राइब करती है किसको, नाउन को या प्रोनाउन को. तो उसी तरह एडवर्ब जो है वो मॉडिफाई करता है किसको, वर्ब को डिस्क्राइब करता है. अगर कोई एक्शन हुआ तो कैसे हुआ, किस मैनर में हुआ. सो adverbs are the words which modify or describe about a verb. Not only verb, it describe an adjective and adverb itself. ठीक है, मतलब कि एक एडवर्ब क्या क्या डिस्क्राइब करती है. एन एडवर्ब डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब. मतलब कि वो कभी कभी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करती है और कभी कभी खुद के मतलब एडवर्ब को भी मॉडिफाई करती है, ठीक है. मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. इट टेल्स अस हाउ, वेयर एंड व्हेन. अगर आपको एडवर्ब जानना है तो कोई भी सेंटेंस में 3 सवाल पूछिए. हाउ एडवर्ब मतलब कि कैसे. वेयर एडवर्ब मतलब कि कहाँ. एडवर्ब ऑफ प्लेस. हाउ मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, इन व्हाट मैनर, हाँ कैसे हुआ. व्हेन एडवर्ब मतलब कि कोई भी चीज जो है कैसे हुई, इन व्हाट मैनर. हाउ मतलब कि क्या हुआ, ठीक है. So next is slowly, very, always, well, too. Yesterday I ate my lunch quickly. So here yesterday tells us when, मतलब कि कब हुआ, ठीक है. I ate my lunch quickly मतलब मैंने कैसे खाया. यहाँ पे वर्ब जो है वो ate है और मैंने अपना लंच जो है वो नाउन है. तो कल मैंने अपना लंच जो है वो बहुत जल्दी जल्दी खाया. क्विकली stands for adverb. यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एडवर्ब, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स जो होते हैं वो जनरली एल वाई के ऊपर एंड करते हैं. इफ अ वर्ड हैज एल वाई at the end of it, then it is an adverb. Here, next is preposition. Prepositions shows the relationship of a noun or a pronoun to another word. The word pre means first and position stands for, means if you get to know the location of anything, a noun or a pronoun, then the word is termed as preposition. For example, at. I am sitting on the sofa. My laptop is kept on the bed. Okay. So in this manner, you can find out how can you maintain a relationship between a noun and a preposition. So preposition main verb is to state a relationship of a noun or a pronoun with the another word. Okay, for example, if I say the dog is sitting, the dog is sitting on the chair. So where the dog is sitting, what is the location of the dog? It is sitting on the chair. Where? On the chair. So in this way, you can state the relationship between a noun and a pronoun. कि उसकी
वो अगर वो बैठा है तो कहाँ बैठा है, अगर है तो कहाँ है, अगर आया है तो कहाँ से आया है, ठीक है। अगर ये ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज आई वॉज लेट फॉर माई क्लास, आई वॉज लेट फॉर माई क्लास बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यूज। तो इस तरह के जो वर्ड्स है that tells you the relationship between the sentences, relationship between a noun and pronoun. What are the examples? At, on, in, from, with, about. I left my keys on the table for you. So here, I left my keys where? On the table for you. Okay? So you can see the word on is stating the relationship between I. I means what? I is a pronoun. Okay? For you. You is also a pronoun. So it states the relations between I and you. Okay? Next is conjunction. Conjunctions are the words, or you can say any ideas or phrases that joins two sentences, two words. These are the sentences that join. Sorry, I have unknowingly I have said because as a preposition. Because is not a preposition; it's a conjunction. Okay, join two words, ideas, phrases together, then shows how they are connected. So you can use conjunctions as connectors also. For example, me and my friend are going to park tomorrow. She and her friend going for a vacation to Goa. So in this way, you can understand how these words act as connectors between two words and two sentences. Now let us see the examples. And, or, but, because, yet. So these are the words that stands for conjunction. I was hot and tired, but still finished it. So we will read precisely about conjunction. Okay. Here next comes the last topic, that is interjection. What do you mean by, yes, Rupali? Ma'am, what is the mean here? I was hot and tired. Tired, I know, but I was hot. जब हमें गर्मी लगती रहती है ना, whenever we feel hot, जब हमें गर्मी लगती है, तो sometimes to state that condition we say I'm feeling very hot today, मतलब मुझे बहुत गर्मी लग रही है, Okay, ठीक है। ma'am. Okay, so now here the last one is interjection. Interjection is a word or phrase that expresses a strong emotion. For example, if you got hurt, you say, "Ouch! I'm so badly hurt." Or "Hooray! India won the match." Oh, you look at the scene. Wow, the scene is mesmerizing. So the words which we use while expressing our emotions, and it always ends with an exclamation mark. That sentence, that word is known as interjection. Okay, it's it ends with, it must have an exclamation mark at the end of the word or the sentence. For example, ouch, hey, oh, watch out, hooray, wow. Okay, so these are the words that comes under interjection. For example, here it is, wow, I passed my English exam, or hooray, I passed my English exam. So yes, let's start with Keethi. Keethi, do you have any queries? Yes, alas. Keethi, do you have any queries, my dear? Yes, ma'am. Yes, go ahead. Ask your query. No, ma'am. You don't have any issues? मैम एक बार हिंदी में थोड़ा सा समझा दीजिए। अच्छा, हिंदी में समझा रहे, क्या समझाना है बताइए। मैम क्या नाम है, एडजेक्टिव और कंजक्शन। कंजक्शन नहीं यस, बोलते उसको, कंजंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। कंजंक्शन। अच्छा चलिए, अभी आप लाइन पे ही रहिए, अभी आप अनम्यूट ही रहिए। कीर्ति, कीर्ति, यस मैम, यस आपको मैम। मेरे बारे में 2 वर्ड बताना है। 2 वर्ड्स बता दो। मेरे बारे में बताइए, कुछ भी बोल सकते हैं आप, मैं बुरा नहीं मानूंगी। ओके मैम। बताइए।
You, you are very smart. आई एम स्मार्ट, तो आई हैव Yes. चोजन द वर्ड स्मार्ट, इसीलिए स्मार्ट हो गया। दूसरा, और और भी बताइए मेरे बारे में। yes, बस आई एम ma'am. वेरी स्मार्ट, बस No, और ma'am. कुछ नहीं। इतना सोचना पड़ रहा है। No, ma'am. Ma'am, you are so. Uh, Ma'am, can I read? वेट 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 स्लो। you are so pretty ओके, girl. प्रिटी। So I have selected two words, smart Yes, and pretty. yes, ma'am. Okay? तो Yes. कीर्ति, आपने दो शब्द मेरे बारे में बताए। Okay, ma'am. किसके बारे में? मेरे बारे में, ठीक है। तो मैं क्या हूँ? आई एम अ नाउन। मेरा नाम क्या है? पूजा सिंह। सो पूजा इज अ नाउन, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू कीर्ति, पूजा इज स्मार्ट एंड पूजा इज व्हाट यू हैव वर्ड प्रिटी, ठीक है। आपने दो वर्ड यूज किया। तो ये जो वर्ड्स है ना कीर्ति, स्मार्ट और प्रिटी, जब आप किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जब आप वो शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, उसको ही हम कहते हैं ना, उसको ही हम कहते हैं क्या? एडजेक्टिव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मैं नाउन हूं, आई हैव अ नेम, माई नेम इज पूजा। तो यू से पूजा मैम इज स्मार्ट एंड प्रिटी। तो आपने मुझे दो शब्द से डिफाइन किया, मतलब कि क्या? स्मार्ट एंड प्रिटी। तो ये जो दोनों शब्द है ना कीर्ति, स्मार्ट एंड प्रिटी, ये दोनों शब्द क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव्स कहलाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इस फोन के बारे में बात करूं, कि ये जो फोन है दिस इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। इस फोन का कलर ब्लैक है एंड इट्स वेरी हैवी। तो मैं इसके बारे में दो क्वालिटी बता रही हूँ, ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है। तो मैं इसके बारे में दो क्वालिटी बता रही हूँ। क्या है? एक, इसका कलर ब्लैक है और ये बहुत हैवी है। तो ये जो हैवी और ब्लैक है ना, ये दोनों वर्ड्स जो है ये एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। तो आप एक चीज बहुत ध्यान से समझिए, जब भी हम किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी कहते हैं, जब भी हम उनको डिस्क्राइब करते हैं, whenever we used to describe any noun or pronoun, so whatever the words we use to describe a noun or pronoun, that is known as adjective. जब भी हम किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते वक्त जो भी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं ईदर, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। गॉट इट कीर्ति? Yes, ma'am. समझ में आया? अब आपका Yes, ma'am. दूसरा पॉइंट है कि मैम कंजंक्शन क्या होता है। तो जी ma'am. कंजंक्शन जो है वो कनेक्टर्स होते हैं, जैसे कि मैं और कीर्ति। ये जो मैं और है ना, Yes, आप ma'am. म्यूट करिए खुद को, मेरी आवाज रिपीट हो रही, ठीक है। सो मी एंड कीर्ति आर टॉकिंग राइट नाउ, ठीक है। एंड हो गया, उसके बाद हम एक और शब्द ले लेते हैं। तो कीर्ति वॉज अनेबल टू ज्वाइन हर क्लासेस yesterday बिकॉज शी वॉज सिक। तो यहाँ पे मैंने जो वर्ड यूज किया है बिकॉज, इसका मतलब है कि मैंने एक रीजन दिया है। तो इसमें भी वो कीर्ति ने कल क्लास क्यों नहीं अटेंड की? तो कीर्ति ने कल क्लास इसलिए अटेंड नहीं की क्योंकि वो बीमार थी। तो वो कीर्ति की कंडीशन के बारे में जो वर्ड है बिकॉज, रीजन स्पेसिफाई किया। तो ये भी एक शब्द एक कंडीशन को दूसरे कंडीशन के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश और आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश बट आई एम नॉट श्योर वेयर टू बिगिन, ठीक है। तो ये जो वर्ड है बट जो है वो यूज दो सेंटेंसेस को जोड़ता है कि आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश बट आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू बिगिन। So these are the words like but, because, and, or, yet, so, and there are multiple examples of conjunction. तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं कंजंक्शन। समझ में आया? समझ में आया कीर्ति? Yes, ma'am. ओके। किसी और को अगर कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच समझने में दिक्कत है तो प्लीज आस्क मी राइट नाउ। No, ma'am, we are getting properly.
properly, na? Okay. So Shlok was asking for reading. So Shlok, I cannot give you such simple thing. Okay? I have to enhance the standard, right? So we will do the reading part. मैं तो reading तो हर दिन कराने वाली हूँ आप लोगों से, ठीक है? ताकि आप लोगों को मैं देख सकूं कि whether you people are paying attention or not. चलिए, अब आज हम लोग जो है स्पेसिफिकली आज हम लोग नाउन्स के बारे में बात करेंगे. अब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें जाननी है और हर दिन हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ कभी प्रिपोजिशंस के बारे में पढ़ें, कभी प्रोनाउंस के बारे में प्रिसाइजली पढ़ें, कभी कंजंक्शंस के बारे में पढ़ें. तो हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हमें एक प्रिसाइज नॉलेज होना चाहिए ताकि जब उसका यूज करना हो तो हम लोग उसको ज्यादा और बेहतर तरीके से यूज कर सकें. ठीक है, चलिए. तो लेट मी टेल यू नाउन. सबको क्लियर है? रूपाली, कीर्ति, हाय नजमा, अगेन यू हैव Yes, जॉइंड ma'am. डियर. ठीक है, सबको नाउन क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है नाउन में? रूपाली की एक बहुत अच्छी आदत है, जब भी मैं पूछती हूँ कोई डाउट नहीं है, वो एक ऐसा वाला साइन मुझे देती है. सो अगर आपको भी कोई डाउट नहीं है तो यू हैव टू गिव मी अ साइन लाइक दिस. एवरीवन? यस, कीर्ति ने भी दिया. नो डाउट इन नाउन. एनीवन एल्स? दयावती, कनिका, नजमा, आपको नाउन समझने में दिक्कत है? मैम थैंक यू सो मच. जी रिपीट नजमा बोलिए. मैम रिपीट कीजिए तो. आप एक्चुअली नजमा, I know that you are very special for me, but I think मुझे सारे सभी बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा ना. So you can do one thing. आप ना इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा यूट्यूब पे, ठीक है? आप Yes, रिकॉर्डेड वर्जन देख लीजिएगा, बट प्लीज ट्राई टू बी ऑन टाइम माय डियर. टाइम पे रहिएगा, क्लासेस टाइम पे ज्वाइन करिएगा, ठीक है? yes. ओके. सो नाउ लेट्स अस डिस्क्राइब द 8 काइंड्स ऑफ नाउन. आज हम लोग नाउन के बारे में और प्रिसाइजली पढ़ेंगे. सबसे पहले तो नाउन के 8 काइंड्स होते हैं. सो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन्स आर देयर? 8. तो कितने नाउन के कितने काइंड्स होते हैं? काइंड्स को बोलते हैं प्रकार. कितने काइंड्स होते हैं? 8. सबसे पहले होता है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होता है? जैसे कि गर्ल. गर्ल में तो कोई भी आ गया ना. गर्ल में मेरी बेटी भी आ गई, गर्ल में यहाँ पे रूपाली भी आ गई, कीर्ति भी आ गई, नजमा भी आ गई. मतलब मैं कोई स्पेसिफिकली नहीं, मैं सब पूरी लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द गर्ल्स इन दिस प्लान. For example, boys. When I say boys, it means I'm not talking about any specific boy. I'm talking about the entire boys on the planet. Same goes with animals, things. So the things which are non-specific people, non-specific places, non-specific things, or any ideas, non-specific name of the animals, ये सारी चीजें क्या होती है? These are called common nouns. क्या बोलते हैं उसको? Common nouns. अब एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे. Man, city, religion, etc. Animals, girls, boys. तो ये सब क्या है? ये सब कॉमन नाउन है. क्या कहते हैं? कॉमन नाउन. अब हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की. प्रॉपर नाउन होता है एनीथिंग दैट हैज अ स्पेसिफिक नेम. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस क्लास आई एम द स्पेसिफिक पर्सन पूजा सिंह. हु इज द टीचर इन द क्लास? पूजा. So Pooja is the name of a specific person. Who is the mentor? Who is a spoken mentor? Here Pooja is a spoken mentor. So Pooja is a proper noun. Pooja is the name of a specific person. For example, Delhi is the capital of India. So we are talking about two specific places, Delhi and India. ठीक है? तो जब भी हम किसी स्पेसिफिक मतलब किसी विशेष व्यक्ति विशेष, किसी इंसान के बारे में, किसी जगह के बारे में या किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं, तब वो कहलाता है प्रॉपर नाउन. क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन. एग्जाम्पल्स क्या है? महेंद्र सिंह धोनी, नरेंद्र मोदी, दिल्ली, भारत, बंगाल टाइगर, डायनासोर. डायनासोर तो हो गया. अगर आप डायनासोर में टीआरएक्स डायनासोर बोलोगे, क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक नेम चाहिए. ठीक है? डायनासोर बोलेगे तो सारे डायनासोर के बारे में बात हो जाएगी. ठीक है? लेकिन अगर आप उसको स्पेसिफाई करोगे कि नो, आई एम टॉकिंग अबाउट टीरेक्स. टीरेक्स एक विशेष प्रकार के स्पीशीज ऑफ डायनासोर का नाम होता है, उसको बोल रहे हैं. ठीक है? तो जब भी हम किसी स्पेसिफिक किसी व्यक्ति विशेष जगह के बारे में, किसी विशेष वस्तु के बारे में, किसी विशेष जगह
के बारे में बात करें, किसी विशेष इंसान के बारे में बात करते हैं, तब वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन का एक रूल है, प्रॉपर नाउन का रूल है कि उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा ही कैपिटल लेटर में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप कहोगे माय नेम इज पूजा सिंह, ठीक है, तो यहाँ पे पूजा का पी होगा वो कैपिटल में होगा, दिल्ली का डी वो हमेशा कैपिटल होगा। प्रॉपर नाउन को हमेशा हम लोग इट ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। ये एक रूल है प्रॉपर नाउन का कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। फॉर एग्जाम्पल, आप इसमें देखिए एल्बर्ट आइंस्टाइन, अब मैं पूजा सिंह लिखती हूँ तो यहाँ पे पी और सिंह का एस दोनों कैपिटल में होगा, ठीक है। तो सेम गोज, आप एग्जांपल्स देख लीजिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन, so एल्बर्ट का ए और आइंस्टाइन का ई बोथ आर रिटन इन कैपिटल। सेम गोज विथ लंदन, लंदन का एल इज रिटन इन कैपिटल। अगर आप मैं बोलूं कि एप्पल मैकबुक यू नो इट्स अ वेरी कॉस्टली नेम ऑफ अ लैपटॉप, सो हियर एप्पल का ए इज विल बी कैपिटल, इट इज द नेम ऑफ अ थिंग, ठीक है। सो हियर आप समझ सकते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है। किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट, एनी No. कंफ्यूजन अप टिल हियर? No, ma'am. ओके, तो अगर आपके कोई डाउट है ना तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और यू कैन गिव मी अ मैसेज आल्सो। ओके, नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन समथिंग दैट यू कैन नॉट परसीव विथ योर फाइव सेंसेस। मतलब कि परसीव का मतलब होता है आप कोई ऐसी चीज जिसको आप अपने पांचों इंद्रियों से नहीं यूज कर सकते हो, कोई चीज को उसको उसको छूना, उसको सेंस करना, उसको देखना। जरूरी नहीं है कि आप अपने पांचों सेंस को यूज करके उस चीज को या तो छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आप उसको महसूस करो, ना देख सकते हो ना छू सकते हो, ठीक है। सो abstract noun is something that you cannot perceive with your five senses। मतलब ये एक ऐसी तरीके का नाउन होता है जो हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना उसको खा सकते हैं, ना उसको यूज कर सकते हैं, ये बस हम महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो इसको एक बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम लोग करते हैं क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल, दयावती, दयावती प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. दयावती, जब आपके क्लास का कोई बच्चा या आपका कोई बच्चा जब क्लास में टॉप करता है तो आप क्या होते हो? आप खुश होते हो क्या दुखी होते हो? आर Happy. यू हैप्पी? यू आर हैप्पी। सो कैन यू प्लीज शो मी योर हैप्पीनेस? Uh, हाउ विल यू शो योर हैप्पीनेस? ma'am, it is a not song. इट इज नॉट श्योर, दैट कैन बी फेल्ट, दैट कैन बी फेल्ट ना। हैप्पीनेस कैन नॉट बी प्रेजेंटेड। हाँ, मैं स्माइल कर रही हूँ, दैट इज एन एक्शन। मैं बहुत Yeah. एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत कुछ वर्ड्स यूज कर रही हूँ, वाओ वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो इज। लेकिन जो मैं महसूस कर रही हूँ खुशी, क्या मैं खुशी को देख सकती हूँ? इट इज समथिंग, क्या मैं मतलब क्या मैं उसको You छू सकती cannot हूँ? touch. No. ये नहीं, मैं उसको ना देख सकती हूँ ना छू सकती हूँ, मैं सिर्फ उसको महसूस कर सकती हूँ, ठीक No. है। सेम गोज विथ दुख, दुख को आप सिर्फ फील कर सकते हो, योर सॉरो, We ठीक है। can express, एक्साइटमेंट, ma'am. हाँ, Express कर सकते. Express कर सकते हम हैं. सिर्फ उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट इट इज समथिंग वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच इट, Yeah. ओके। सो ये चीज जो है दैट कम्स अंडर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। योर थिंकिंग, योर इमेजिनेशन, आपके इमेजिनेशन, आपके आइडियाज, आप आइडियाज छू नहीं सकते, आप आइडियाज को पेपर पे लिख सकते हो तो वो एक रिटन फॉर्मेट हुआ। योर इमेजिनेशन, आपकी जो सोच है, आपकी जो इमेजिनेशन है वो कोई नहीं छू सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये सारे जो है दीज ऑल दीज वर्ड्स कम्स अंडर एब्स्ट्रैक्ट Abstract नाउन, noun. ठीक है। क्लियर है Yes. सबको? Yes, ma'am. एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन? There is no doubt, ma'am. Thank you so much. Yes. So we will see the examples of abstract nouns. Believe. Believe का मतलब होता है विश्वास,
विश्वास एक ऐसी चीज है जो हम सिर्फ किसी पे कर सकते हैं, अपना बिलीफ शो कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट हम उसको छू नहीं सकते. सेम गोज विथ लव. वी कैन एक्सप्रेस आवर लव, ओके, बट वी कैन नॉट टच इट. प्राइड, हम किसी पे गर्व कर सकते हैं, but we can only express it. We cannot touch it. We cannot. We can only feel it. We cannot touch it. Happiness, sorrow, your imaginations, your ideas. ऐसे बहुत सारे. There are multiple examples of abstract nouns. Clear है सबको? Yes, ma'am. Okay. Okay. Next is concrete noun. What do you mean by concrete noun? Something that you can perceive with your five senses. अब ये abstract noun का just antonym होता है concrete noun. ऐसे नाउन जिसको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, जो फिजिकली जो है आपके हाथ से आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, एवरीथिंग. ठीक है. अब जैसे कि ये फोन हो गया, ये बॉटल हो गया, ठीक है. आई कैन टच माई हेड, आई कैन टच दिस पिलो. So everything that you can perceive with all your five senses, that you can touch, that you can see, that you can feel, anything that comes under concrete noun. You can see the examples: apple, lion, eyes, flower, etc. But whatever you can see, you can touch it. Okay, that comes under concrete noun. Clear है सबको? Yes, ma'am. Okay, thank you. Let's proceed with countable nouns. So countable noun, it is very simple. Things that can be countable, nouns that can be countable are called countable nouns, and nouns that cannot be counted are called uncountable nouns. जैसे कि हम number of phones count कर सकते हैं. For example, I have 2 phones. मेरे पास 2 laptops है. I have more than 3 pillows. मेरे घर में टोटल 5 बेड्स है. तो ये सारी चीजें मैं काउंट कर सकती हूँ. बट क्या तुम मिल्क काउंट कर सकती हो? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द केन ऑफ मिल्क. I'm not talking about the glass of milk. I'm just talking कि आप मिल्क को काउंट कर सकते हैं, क्या आप पानी को काउंट कर सकते हैं, क्या आप वाटर को काउंट कर सकते हैं, क्या आप राइस को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते. सैंड इज अनकाउंटेबल, स्नो इज अनकाउंटेबल, एयर इज अनकाउंटेबल, मिल्क, एनीथिंग दैट इज इन लिक्विड फॉर्म, दैट इज टोटली अनकाउंटेबल. सो ये सारी चीजें हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. That comes under uncountable nouns. And things that we can count, mostly all concrete nouns that we can hold it in our hand, that can be countable. ठीक है. मोस्टली जितने भी कॉन्क्रीट नाउन जिसको अगर अपने हाथ में होल्ड कर सकते हो, तो उन सारे नाउन्स को आप काउंट कर सकते हो. बट लेकिन म्यूजिक को आप काउंट नहीं कर सकते हो, ना ही आप अपने हाथ में होल्ड कर सकते हो. वाटर को आप अपने हाथ में होल्ड नहीं कर सकते हो. राइस को आप बोलोगे कि मैम मुट्ठी में, लेकिन यू ऑल्सो नो कि राइस, सैंड और स्नो ये सारे हाथ में बहुत देर तक नहीं रहते. ये आपके हाथ से फिसलेंगे ही फिसलेंगे. तो आप इनको काउंट नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल स्टार्स आर ऑल्सो अनकाउंटेबल. ठीक है. सो थिंग्स और इन शॉर्ट नाउन्स that cannot be counted comes Ma'am, under Shlok is saying that we can count rice. no, my dear, you cannot count rice. You can count the particles of the rice, but you cannot count rice. Rice is uncountable. And this, I'll tell you precisely why I'm saying this. Why I'm saying this, I'll tell you precisely, but not today, but in the very next class. I'll tell you with specific reasons. ठीक है. उस तरह से बोलो तो सैंड को भी काउंट कर सकते हैं, उस तरह से बोलो तो साउथ को भी काउंट कर सकते हैं, अगर आप एक एक गाने की बात कर रहे हो. बट इज इट प्रैक्टिकल? अब आप बोलो कि मैम अब राइस के दानों को काउंट कर सकते हैं, तो मैं तो स्टार्स को भी काउंट करती हूँ. साइंटिस्ट से पूछो, उनको पता होगा. नहीं. आपको लगता है कि हाँ मैं काउंट कर सकता हूँ, बट इट इज अनकाउंटेबल. यू कैन नॉट काउंट इट. ठीक है. Okay, next is compound noun. Compound nouns are made up of 2 or more smaller words. ठीक है. compound noun जो होता है वो 2 या 2 से ज्यादा छोटे वर्ड्स को मिलाकर बना हुआ होता है. फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट और बुक मिला के बनता है टेक्स्ट बुक. Ma'am, नो और वर्क. यस. ma'am, can we count words? Words. वर्ड्स इन द सेंस आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट. Ma'am, like Shlok asked to me that if I give you 1,000 of words, can you count? You have already said
Ma'am, if I give you 1,000 words, if you're specifying that I give you 1,000 words, so of course it can be counted. You already know the ratio that I am giving you I was 1,000 words. in dilemma that can we count or not. Yes. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे वर्ड्स चाहे वो ओ आर और हो etc आप यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट लेटर्स राइट इवन देन लेटर्स एंड वर्ड्स आर आल्सो काउंटेबल मैं अभी एक टास्क दूंगी श्लोक को ठीक है और श्लोक मुझे बताएगा हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर तो वर्ड्स कैन बी काउंटेड माय डियर आपने मुझे ऑलरेडी स्पेसिफाई करके बता दिया कि आई गिव यू 1,000 वर्ड्स इट इज ऑलरेडी स्पेसिफाइड एट द वर्ड हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर सो 1,000 अंडरस्टूड चलो नेक्स्ट इज कंपाउंड वर्ड्स कंपाउंड वर्ड्स Yeah, आर अ मिक्सचर compound words are the mixture of two or more smaller words for example text and book becomes textbook snow and ball becomes snowball sea and food becomes sea book sun and flower becomes sunflowers you can come up with more examples of compound words anyone sea and horse becomes seahorse anyone else would you like to play this game compound words compound nouns is Snowfall. बोलते snow and fall becomes snowfall very good anything else Dayavati Kanika Sunglass. sun and glass becomes sunglass very good interesting all right so we are done with compound noun so next is collective nouns so collective noun is a noun that refers to a group of things as one whole Ma'am, so whenever bottle. water bottle very good Shlok water and bottle becomes water bottle okay anything else woodcutter, huh woodcutter, woodcutter, wood cutter wood and cutter becomes wood cutter very good next Ma'am, nail cutter. nail cutter nail and cutter becomes nail cutter yes very good you people started enjoying Yes, ma'am. yes Footboard. Cupboard. cupboard it is not cupboard it's cupboard Ma'am, footboard. footboard footrest Chopping board. chopping board very good Ma'am, तो समझ basket. में आ गया ना सबको बास्केटबॉल वेरी गुड कानिका चलो toothbrush, very good excellent excellent now we can wind up this game now we still have three kinds of nouns left okay so now we are talking about collective nouns it refers to a group of things जब भी हमें किसी ग्रुप को एक नाम देके बुलाना है और तो हम उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन जैसे कि अ ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन एज क्राउड अब हम ये नहीं बोलेंगे देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल स्टैंडिंग आउट देयर नहीं देयर इज अ क्राउड ठीक है आई डोंट वांट टू गो टू मेला और आई डोंट वांट टू गो फॉर टू दिस पार्टी there are many group of people no we cannot say that I don't want to go to any party because it's full of crowd yeah it's very crowdy वहां पे बहुत लोग हैं तो जब हम crowd की बात करते हैं तो it means that we are talking about group of people so अगर हम बोलेंगे कि there are many students in the class ठीक है तो द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग किस चीज से डिफाइन करेंगे क्लास से डिफाइन करेंगे ठीक है उसी तरह से ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जब भी हम किसी ग्रुप को एक यूनिट में नाम देना होता है तो हम उसको एक नाम के थ्रू उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन बंच ऑफ फ्लावर्स मतलब कि फूलों के गुच्छे को हम कहते हैं बंच ठीक है ऑडियंस जो हमारे व्यूअर्स होते हैं अ ग्रुप ऑफ व्यूअर्स आर नोन एज ऑडियंस अ ग्रुप ऑफ शीप का मतलब भेड़ उनको बोलते हैं फ्लॉक ऑफ शीप ठीक है an army of soldiers a group of soldiers is known as army people who lives together is known as family हम ये नहीं बोलते ना उनको अलग अलग group of people live together in the house we say that we are the family of five we live together तो जब भी हम किसी ग्रुप को रेफर करते हैं किसी एक नाम से तो that is called collective noun तो कलेक्टिव नाउन के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं दैट आई विल टेल यू इन आवर नेक्स्ट क्लासेस ओके नेक्स्ट इज सिंगुलर नाउन व्हाट इज
What is singular noun? Singular noun. Tanish Carnival. Please turn off your video. Singular noun is referred to one person, place, things, or idea. So whenever we talk about only one person, place, idea, things, and anything, that is called singular noun. तो जब भी हम किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक जानवर, किसी भी चीज के मतलब कि वो काउंटिंग में एक होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं सिंगुलर नाउन. और जब हम एक से ज्यादा वस्तु, एक से ज्यादा चीजें, एक से ज्यादा नाम, एक से ज्यादा जगह के बारे में बात करते हैं, तो वो होता है प्लूरल नाउन. यू कैन सी इट इज रिटन refer to one person, place, things, or idea. And plural noun refer to more than one person, place, things, or ideas. जैसे कि कैट का कैट्स हो गया, डॉग का डॉग्स हो गया, शिप का शिप्स हो गया, मंकी का मंकीज हो गया, हीरो का हीरोज हो गया, बेबी का बेबीज हो गया. So in this way, we have completed our 8 kinds of noun. ठीक है? So any doubts, any confusion in this? Any doubts, any confusion here? No, Yes, ma'am. you. अगर होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता. Because I love to tackle all the doubts, I love to tackle all the queries. Okay, so now I hope so. found today's class very Yes. interesting. I a lot. Thank you, ma'am, for Thank these you. amazing. Thank you so much. So in this way, today I have elaborated about 8 kinds of noun. So in the same way, That is wonderful. thank you so much, Lo. So yes, I was saying that today I have elaborated about 8 kinds of noun. और ये जो nouns है मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये हम लोग almost it is essential for your speaking. It is essential for enhancing your knowledge. It is essential for enhancing your communication क्योंकि ये सारी चीजें ना हम लोग कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, इन सब चीजों का हम यूज करते हैं. ठीक है, चलो अब हम लोगों का रीडिंग बचा हुआ है. ठीक है, just give me a moment. So yes, we are left with the reading, and why I have taken the initiative to do the reading every day, because you know what, reading is something that should be done on a regular basis. हर दिन रीडिंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा आपके कम्युनिकेशन पावर को और बढ़ाने के लिए. ठीक है, लेट मी फाइंड समथिंग गुड फॉर यू. So yes, let's start with Dayavati. So Dayavati, you will read only one paragraph. Okay, Only ma'am. you will start from the caption, you will read the directions, and you will read just one, the first paragraph. Okay? Yes. I will Start. have to laugh, ma'am. From here. Just, Start reading from here, and you will end from here. Europe. just a minute. Go ahead. Ma'am, what is showing very small, ma'am? Just a minute. I'm doing Okay, if you're getting last. problem, Okay. take your time. Take your time. Rupali, over to you, dear. Yes, ma'am. Okay, ma'am. I'm ready to read. Wait a minute. So now I'll give you turn in the next. You will read next paragraph, Dayavati. Okay? Okay. Okay. Yes, Rupali, over to you now. Okay, ma'am. Chess. Directions. Read the following passage and answer the questions that follow. Refer to the next to check your answers. Refer to the text. It's written refer to the text. Refer to the text to check your answers when appropriate. Chess is called the game of kings. It has been around for a long time. People have been playing it for over 500 years.
Chess is based on an even older game from India. The chess we play today is from Europe. So very good, Rupali. The only thing you have to take care, very well read. It's appropriate, not appropriate. It's appropriate. Okay? Appropriate. Appropriate. Okay. Yes. Thank you so much. Over to you, Dayavati. Start reading from here. Okay, ma'am. Chess is a two-player game. One player uses the white pieces. Pieces. The other uses the white chess pieces, black pieces. Each piece moves in a special way. One piece is called the king. Each player has one. The players take turns moving their pieces. If a player lands on a piece, he or she takes it. The game ends when a player Loses. Loses. loses his or her king. There are a few more rules, but those are the basics. Dayavati, I must appreciate. Very well read. Only thing you have to take care. It's a. आप बार बार पढ़ते हो but mind blowing reading. Very good, Dayavati. Keep it up. Kanika, next. From here you will read. Yes, Kanika, start reading first. Some people think that chess is a more than a game. They think that it makes the mind stronger. Good chess players use their brains. They take their time. They think about what will happen next. These skills are useful in life and in chess. Chess is kind of like a workout for the mind. Very good, very well read. But the only thing you have to take it, just is they take their time. आप जो टेक TAK, MAK उसको आप मैक बोल देते हो, TAK को टैक बोल देते हो. So you have to be very careful while reading. Understood? Okay, तो ma'am. बट ओवरऑल कल जो आप जो मिस्टेक्स कर रहे थे आज आपने वो मिस्टेक्स नहीं की है. आप बहुत आराम से पढ़े हो. So very good, Kanika. Next, Megha is there. Megha is not there. Okay, Kirti, Yes, ma'am. start reading from here. You don't always. Yes, ma'am. You don't always have lots of time to think when playing chess. There is a type of chess with short time limits. It's called Blitz chess. blitz chess. In blitz chess, each player gets 10 minutes to use for the whole game. Your clock run during your turn. You hit the time clock after your move. This stops your clock. This stops your clock. Okay, ma'am. This stop your clocks. It also start the other player's clock. If you run out of time, you lose. Games Games, of blitz, blitz chess are fast pace. fast pace. Fast pace. Very well read, Kirti. Very good. Excellent. Keep practicing, my dear. Okay? Yes, Thank you. Nazma. Last paragraph for you. Nazma. Yes, ma'am. Chess is not just for people. Computer have been Computers. playing chess Since since the 1970s. 1978. At first, First, they did not play well. They made mistakes. made mistake at time when on they Grew. On they grew. on the grew at Stronger. stronger. Hmm. It,
Ma'am, In could you 1997, okay, I'll in read it for you, Nazma. I'll read it for you. But yes, you need to put a more emphasis on reading. थोड़ा सा practice करो. In 1997, a computer beat the beat player in the world for the first time. It was a computer called Deep Blue. Deep Blue was big. It took up a whole room. By 2006, a cell phone could beat the beat players in the world. Chess sure has come a long way. Don't you think so? So yes, so in the same way, I'll take care of the words that should be English comprehension. The words should be bigger for your convenience. So yes, I hope so. You people like the class. I hope so. I expect that you people like the class. And yes, English reading. These things are very true. Okay. So we will elaborate one part of speech, not on a regular basis, but yes, I'll definitely design the classes as per the routine. Okay. So yes, it's time to say goodbye. So yes, see you again tomorrow. I'll meet you with an interesting topic. So bye Have a bye nice day everyone. ahead, ma'am. Thank you so much. Bye bye.